morning students. Welcome back to SST class of 6th. Children, in my previous video I had started the term 1 syllabus and the first chapter of term is your chapter number 9 of geography, that is natural vegetation and wildlife. Children, you know that your syllabus is divided into 3 parts, that is pen paper test, subject enrichment and activity chapters. So I have started with our pen paper test and the first chapter of this portion is chapter number 9 of geography, that is natural vegetation and wildlife. Okay children, in my previous video I had told you what do you mean by natural vegetation, what is wildlife and the types of forest found in India. In our previous video we have studied that there are there are 5 types of forest in India and we have covered 3 forests. Today we will be studying about the desert vegetation, mountain vegetation and the mangrove forest. Okay children, what is forest? A forest is a large area covered with plants and trees. Okay, and what are the natural vegetation? Natural vegetation means flora, that is plant life, and it includes herbs, shrubs, grasses and trees. And wildlife include all the varieties of the animals and birds and insects too. Okay, and we have studied that there are 5 types of forest found in India, that is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, mangrove forest, desert vegetation and last is mountain vegetation. Okay, so in my previous video I had covered tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. Now children, today I will proceed further, that is about the desert vegetation. As you know what is desert? A desert is a large area or land. It is fully covered with sand with very less rainfall and less plant vegetation. Okay, so desert vegetation, it is found in the dry or desert areas of the country which receive low rainfall and have high temperature. तो ये ऐसे एरियाज में पाया जाता है जहाँ बहुत कम बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है. Okay, the trees are sparse with bushes and shrubs between them and the trees are very sparse, मतलब बहुत कम होते हैं, only bushes यानी कि झाड़ियाँ पाई जाती हैं. In some plants leaves are in the form of spines to avoid loss of water. और हमने पढ़ा है कि ऐसे plants तो डेजर्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम xerophytic plants कहते हैं और वहाँ पे जो leaves होती हैं वो spines में reduce हो जाती हैं to prevent the loss of water, that is transpiration. Okay, then most of the plants have deep roots, thick barks and long needle-like thorns. तो अगर आप plant को देखेंगे तो इनके जो रूट्स होते हैं बहुत थिक होते हैं so that they can go deep into the soil and can absorb maximum water, and needle like leaves so that there is very less amount of water loss. Okay, this type of vegetation is found in Rajasthan, Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Deccan Plateau and the eastern slopes of the Western Ghats. Okay children, then the main trees of this type of vegetation are acacia, then cactus, kikar, babool and khair. Okay, so cactus we can commonly see, cactus, babool, all these trees have spines as you can see that, so that there is very less loss of water. Okay children, now our next vegetation is mountain vegetation. As the name suggests, this type of vegetation is found in the mountain or the hilly areas. The vegetation in the mountain differs with variation in height. जो vegetation mountain region में होता है वो जैसे जैसे height बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेरिएट करता है, डिफरेंस करता है. The temperature decreases with increase in altitude and affects the type of vegetation found on mountains. We have already studied in science and in social also कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते, as we go higher the temperature decreases. जितना higher altitude increase होगा टेम्परेचर उतना ही ड्रॉप यानी कि डिक्रीज होगा और उसका इफेक्ट हमारे वेजिटेशन पे भी पड़ता है. Therefore, the vegetation on the mountain differs from tropical to the alpine types. तो जो vegetation होता है माउंटेन का वो प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है, that differs.
At the height of 1500 to 2500 meters, there are tropical trees in the conical shape and are known as coniferous forest. और 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जब हम जाएंगे, the trees which are found in the mountains are called as coniferous trees. उनका नाम होता है coniferous trees. Why? Because their shape is like cone shaped. उनका cone की shape में होता है. That's why they are called as coniferous forest. The main trees of the mountainous types of forest are pine, kedar, then silver, fir, deodar, spruce, oak, chestnut and cher. So these coniferous trees are found in the mountainous regions or the mountain parts of the India. Okay. Then below the level, that is up to an altitude of 1000 meter, tropical deciduous forests are found consisting of the hardwoods like bamboo and sal. और अगर हम नीचे की ओर जाएंगे 1000 मीटर की ओर जाएंगे तो हार्ड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जैसे कि बैम्बू एंड साल. ओके, about 3500 meters just below the areas which are always covered with snow, we find alpine meadow which consist of shrubs and grasses. Trees are not found at this height. और जब हम बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे यानी 3500 मीटर्स पे जहाँ की माउंटेन्स आर फुली कवर्ड विद स्नो, we can find their alpine trees, shrubs and meadows. वहाँ पे trees नहीं पाए जाते हैं. Okay, clear? Now the third type of vegetation is mangrove forest. What are mangrove forests? The forests are found in places which are flooded by high tides of the sea. ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ का जो सी में हाई टाइड आता है उससे हमेशा वहाँ पे पानी मिलता रहता है. ओके, द वेजिटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर. और मैंग्रोव फॉरेस्ट की खासियत क्या होती है कि दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर. सलाइन मतलब सॉल्टी, खारे पानी में भी ये ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं. ओके, देन backwaters and salty marshes mostly in the delta regions where river merge into the sea, and they can even grow into the marshy areas. दलदल वाले एरिया में भी grow कर सकते हैं. Such vegetation is found almost all the eastern coast, especially in the large deltas formed by the river like Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Okay, the lower delta of the Ganga and Brahmaputra rivers in the West Bengal is an example of मैंग्रोव फॉरेस्ट. अगर हम लोअर डेल्टा देखें गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो कि सुंदरबन डेल्टा है वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं. ओके, द फॉरेस्ट इज नोन एज सुंदरबन. और इस फॉरेस्ट को हम सुंदरबन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो सुंदरी ट्रीज होती है और वन मतलब क्या होता है फॉरेस्ट. सो ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाई जाती है उसका नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा. एंड इट इज द हाईएस्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. ओके, देन due to the presence of sundari trees, these trees provide hard, oily and durable wood. और जो ये सुंदरी ट्रीज होती है बहुत ही हार्ड होती है, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ होती है एंड आर वेरी गुड. ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और अगर हम देखेंगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं. Importance of forest. Children, we know that forest is very important for us. Once a large part of India was covered with forest, but at present due to unrestricted cutting of trees, only 22% of India remains covered with forest. तो पहले इंडिया बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर था, बट बिकॉज ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड कटिंग, लगातार ट्रीज कट करने के कारण फॉरेस्ट बहुत कम बचा है. ओनली 22% ऑफ फॉरेस्ट इज लेफ्ट इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, द मिनिमम फॉरेस्ट कवर शुड बी 33%. और अगर हम नेशनल पॉलिसी देखें तो फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए? यस, इट शुड बी 33%. ओके, फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, कई तरीके से हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, देन दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. Then they are you can say habitat of living beings, animals and birds. Okay,
and they also prevent flood by holding the roots of the trees. Okay, and they provide many useful products like timber, lac, honey, fruits, etc. Okay children, so trees and plants absorb carbon dioxide and release oxygen. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करते हैं and by the process of photosynthesis they make their food and give out oxygen. Then they produce timber and other forest products such as medicinal herbs, gum, resin, हनी एंड लैक. इसके अलावा वो कई सारे टिम्बर प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि बिल्डिंग्स और फर्नीचर बनाने के काम आते हैं. लैक देते हैं, हनी देते हैं, कई मेडिसिनल हर्ब्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट से. सो दे आर वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल फॉर अस. दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग रेन, कंजर्व सॉइल, कंट्रोल फ्लड, जनरेट टूरिज्म एंड प्रोवाइड द हैबिटेट्स टू वाइल्ड लाइफ. तो ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं जो ट्रीज के रूट्स होते हैं, फ्लड नहीं आता जिसके कारण, देन बैलेंस बना के रखते हैं, टूरिज्म का सेंटर है, और साथ ही साथ बहुत ही सारे एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स का ये क्या है, नेचुरल हैबिटेट है. सो इन दिस वे फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके चिल्ड्रन, सो there is a forest research institute at Dehradun, Uttarakhand where people are trained to take care of forest. तो अगर हम बात करें इंडिया में, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में है, जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कैसे वो फॉरेस्ट को कंजर्व बचा के रख सकते हैं. फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस एंड इज अंडरटेकन हियर. तो यहाँ पे फॉरेस्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है. पीपल टेक वेरी केयर ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, सो चिल्ड्रेन, that's all for today. In today's topic we have studied about the desert vegetation, the mountain vegetation, about the mangrove forest, and about the importance of forest. In the next upcoming video, that is during the live class, I will be discussing the wildlife of the India, and after that we will discuss the exercises and question answer of the chapter. Okay children, so today's homework for you is question number 1 is what are coniferous trees. Okay, then question number 2 is name the types of vegetation found in the desert area. Then third is why mangrove forest is also known as Sundarbans. Then question number 4 is where is the Indian Forest Research Institute situated. And question number 5 is how forests are important for us. So children, these 5 question answers you have to note down in your homework copy in a neat and clean handwriting. And children, go through the chapter, read it, underline the important points, okay, and learn all the key terms of the chapter that is given at the starting of the chapter. Okay children, and I hope that whatever I have taught you, you have understood it very well. So that's all for today. Take care of yourself student. Thank you.